Okay, guys, welcome back to your own channel, Trending Stocks. So, like I said, instead of writing comments over here, it's better to discuss. I mean, share with charts. तो of course it's kind of win-win situation. मेरा YouTube भी थोड़ा सा चल पड़ेगा and you will also get a live experience on this. So I'll start with the first one, Saurabh CDSL. ओके सौरभ ये सी डी एस एल का चार्ट है एज यू सी आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम इट वाज अ कंप्लीट रिवर्सल नाउ इफ आई टॉक अबाउट राउंडिंग बॉटम ऑन शॉर्टर टर्म्स दिस इज देखो ये बना हमारा राउंडिंग बॉटम और एज आई से राउंडिंग बॉटम का हमारा टारगेट होता है द लेंथ ऑफ दिस तो अगर मैं इसको ड्रैग करके इस पर करूँ तो हमारा ये 1600 का है 1587 इज द तो शॉर्ट टर्म इज दिस आपको 1580 तक तो जाना ही है आई थिंक कल 1440 1440 के आसपास हमने इसको दिया था दैट वाज ऑफ कोर्स उसके बाद भी मुझे लग रहा है ये इट विल मेक अनदर राउंडिंग बॉटम जो कि बड़े वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये एक और बड़ा राउंडिंग बॉटम बन रहा है तो और अगर आप इसी सिस्टम से अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अगर इसको आप यहाँ पे लाके मेजर करोगे तो इट कम्स अराउंड 1900 समथिंग और हमारे एलिगेटर लाइन के ऊपर है तो इट इज़ ऑलरेडी इन पॉजिटिव जोन तो मुझे लगता है इट विल परफॉर्म गुड तो अब होता क्या है सब कई बार व्हेन इट रन सो फास्ट ना तो लिया नहीं जाता सो इन दैट सेंस व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करो इट मूव्स अप तो आप उसमें और ऐड कर सकते हो अगर इफ मूव्स डाउन देन यू डोंट हैव मच टू लूज ना अब आप देखो वॉल्यूम बार्स बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी है 1900 का टारगेट आई कैन सी सो होल्ड ऑन वी आर होल्डिंग एंड कीप ऑन होल्डिंग second is Nayak Sumantai Fosek. What is that? Foseco. I don't know how to pronounce it. FOSCCO. Foseco India. Okay, it's in big uptrend if you see. अगर आप I mean if you see on weekly charts, it's making higher highs, right? Now it is retracing with market. Of course, many stocks are retracing. तो अगर रिट्रेसमेंट होगी तो मैक्सिमम हमारी सेलिगेटर लाइन तक हो पाएगी विच कम्स अराउंड 3000 पॉसिबल है कि देखो ये इसने पहले भी यहाँ पे टच किया यहाँ पे सपोर्ट ली बट समटाइम्स हो सकता है यहाँ से ऊपर भी लिया हो अगर आपके पास होल्ड है आई मीन फ्रेश बाय डोंट बाय एज सुन जब तक हमारी कोई एक क्लैरिटी नहीं आती अदरवाइज इफ यू होल्डिंग वेर इज आर लिमिट लाइन इट कम्स अराउंड 3000 और मे बी यहाँ पे आएगी 3000 3100 सो बट इट इज़ मेकिंग अ बुलिश इन गल्फ अभी कंप्लीट बुलिश इन गल्फ नहीं हुआ है बट सीन द स्टेट कैन बी आई मीन if you want to take it on shorter time frames see on daily time frame it's showing buy signal so if you want to buy fresh stop loss comes around 3300 but because markets are correcting I'll say 3100 is 3000 to 3100 is strong support zone. Next is Edelweiss FinServ, right? Okay, it was a proper rounding bottom. This is how you see. Right? You calculate from here. It made a rounding bottom.
breakout was there, and now it is retesting this. So if you want to buy fresh, or देखो you can see these volumes are there, buying volumes are there. So if you want to buy fresh, यहाँ पे एक I mean it's a good place to enter. You can buy fresh here, right? Let it go green. Let one candle make green. But I think it is near support. हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए. I mean with the momentum it is going on. You can keep a stop loss below. No, actually it comes very deep. 53 was 55. So 52, 53. This candle's low becomes. I don't think it should come here. But in any case, you should keep the stop loss of uh, below 50. थोड़ा सा डीप होगा, बट आई थिंक बिकॉज वॉल्यूम्स आर देयर, ब्रेकआउट हुआ था, इट इज़ रीटेस्टिंग, तो मोस्ट पॉसिबली इट विल मूव अप नाउ. हो सकता है विद इफ मार्केट स्टेबलाइजेस देन इट स्टार्ट शोइंग स्ट्रेंथ. So if you're holding, keep on holding. Breakout is already there. Hopefully it will not fail, and you can keep a stop loss below 50. The next is Dhunseri Ventures, Harshit Gupta. Yeah, if you see, it is moving in a big channel, ना. ये देखो. यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पर इसको बेसिकली ये सपोर्ट है. सो इट्स मूविंग इन अ चैनल. सो इफ यू वांट, देखो यहाँ से इट कम्स हियर, देन बाउंसेस एंड देन फेसेस रेजिस्टेंस एंड कम बैक. तो अगर फ्रेश बाय करना है, यू बाय अबव द लेवल दिस व्हेन इट कम्स आउट ऑफ ब्रेकआउट चार्ट. और if you are already holding, keep a stop loss of this which comes around 260. 260 थोड़ा नीचे रख लो, right? Because हो सकता है it sometimes with volume it can it touches this, but since buy signal is there, and if you want to put a stop loss, 250 is I think should be the closing basis. 250 should be the stop loss. Fresh buy only when it comes out of this breakout. I don't see as of now, it's just consolidating for around 2 years, I guess. KECL, right? Let's see. It is in uptrend. So basically, it moves and then retraces and then again moves, making new higher highs. यहाँ पे एक लोअर हाई बना है, बट आई थिंक इट शुड टेक सपोर्ट. आइदर देखो, अगर सपोर्ट लेनी है तो जो प्रीवियस सपोर्ट है या तो इसको मार्क कर लो आप, अदरवाइज ये जो हमारा एलिगेटर है वो यहाँ पे आएगा तकरीबन अराउंड 104. तो 100 के स्टॉप लॉस यू कैन बाय. आई मीन यू समटाइम्स यू हैव टू कीप इट, आई मीन बिट डीप, और वो भी क्लोजिंग बेसिस. आई मीन wait till 3 p.m. and if it goes because volumes are there. So if you're holding, keep this as stop loss, and if you want to buy fresh, if it comes in this range, you can buy it here. Wellspun India holding since 2021 at 135. Quarterly results were good, and so hold a book. Wellspun India, I think really they, होता क्या है, कई बार ना रिजल्ट अच्छा आता है लेकिन ना स्टॉक ऑपोजिट रिएक्ट करता है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग होती है काइंड ऑफ. सो यू शुड ऑलवेज वेट समटाइम्स. अब देखो ये इट्स क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, राइट? तो ये एक्चुअली इसकी रेजिस्टेंस जोन है. तो इफ़ यू आर आई मीन इफ़ यू आर होल्डिंग, देखो एज सच यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट जोन भी बन सकती है. रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट रिजल्ट तक, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर तक इट विल परफॉर्म गुड. अब इफ़ यू ऑलरेडी होल्डिंग, तो इसके दो तरीके होते हैं. आई मीन यू कैन कंटिन्यू विद फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स. एक तो ये है कि आइदर इट गिव्स ब्रेकआउट, देन इट विल मूव, या ना आप तब तो योर रेजिस्टेंस विल बिकम द सपोर्ट.
So you can either trail your stop loss, right? Either you trail your stop loss, or you can do one thing, you can book your profit, and if it closes above this, you can fresh buy there with stop loss below this. आपके पास दोनों, I mean you can always do it both ways. यहाँ देर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, तो एक बार तो इट विल ऑलवेज रिस्पेक्ट, तो यहाँ से अगर फॉल हुआ तो इट कैन कम टू अराउंड 110 लेवल्स. तो आइदर यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज, या तो ट्रॉल्स स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, इसी कैंडल के नीचे लगा लो विच इज़ 145, या फिर यू बुक प्रॉफिट और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 4-5 रुपये है ना, यू कैन ऑलवेज बाय अगेन ओवर देयर. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इट. Since the results are good, you can go for this thing. I mean, you can hold, keep a stop loss on closing basis. I mean, trail your stop loss and let it move further. Above this, it will gain more strength. Star Health. I think Star Health. I saw the results. Results were not so good, but I think there is not much downside also. If you see, downside was already there. Now this is just quick reaction to uh, bad results. Bad results थे, and then actually it had given a breakout here when I had given the recommendation this stock. तो जब it was when it was actually uh, respecting this alligator, तो but the moment it came here, इसको break किया, I told people to exit. हो सकता है some might have not heard it. तो अब if you are because this alligator is now basically big resistance, until and unless it crosses and sustains above this, it will be a resistance. तो आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं, either you can do this thing, I think, because अब नीचे आया तो पॉसिबली ये इस सपोर्ट तक आ सकता है, which comes down 515 or so, right? उससे ज़्यादा तो नीचे है नहीं, and if you see the volume buying are there, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं जाता. इट इज़ नॉट गोइंग टू गोइंग इन डस्ट. तो यहाँ से थोड़ी सी हो सकता है एक्चुअली रिजल्ट्स बुरा है तो एक मोमेंटम होता है, एंड देन इट माइट बाइंग माइट बी सीन हियर बिकॉज कंपनी इज़ गुड. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है, अंडर पेनिट्रेटेड है, सो आई थिंक इट विल स्टिल मूव. तो इफ़ यू आर इन small loss, you can come out of it, and if you are in big loss, I would say just hold, keep waiting. ऐसा तो है नहीं, I mean a time would come that it would cross this and then move up. Tata Power, yet I am very positive on Tata Power. Fundamentally or technically it looks good to me, both bases, right? देखो, it had given a breakout over here. It went there, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था, बट विद मार्केट इट फॉल्स, और अब यहाँ पे इट्स कमिंग टू इट्स सपोर्ट जोन विच इज़ 230. तो यहाँ पे इट्स होल्डिंग. अब अगर इससे नीचे भी जाएगा तो देन वी माइट हैव टू सी ऑन मंथली वेदर इट इज़ पॉसिबल. I don't think it will go much down. So keep on holding. It's a good stock. It's near support. Rather fresh buy can be done here. Ramkey Infra. It's a big up move up. देखो इसमें मैं technically what can I do? I cannot give you any targets because it's already going in vertically. So it's just that it can profit booking can come at any place. I cannot do anything on this. All you can do is fresh buy, strictly avoid, right? And even if you want to do aggressive buying, you can do thing. You buy here with a stop loss below this 575, and if you are holding till your stop loss, that will again the same 575. If it comes below this, just come out of it.
Gulf oil stocks I think all are doing good. देखो it's in a buy zone, rounding bottom बना रहा है with resistance. I mean it's just facing the resistance, just respecting it once. तो एक बार तो वो स्टॉक्स रिस्पेक्ट करते ही हैं. तो अगेन इन सच सिनेरियोज लाइक आई सेड इन प्रीवियस पोस्ट, either trail stop loss or if book profit, and if sustains above this level, you can fresh buy above this with a stop loss below this, which is 600. At this place do not buy fresh. Okay, buy when it crosses and sustains over this, or you can trail your stop loss. Snowman. इट्स अगेन आई मीन ये इसकी रिटेस्ट जोन भी है और सपोर्ट जोन भी है, 45 44. तो जस्ट होल्ड इट विद दिस स्टॉप लॉस. मैंने इसके आई डोंट नो, इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं किया. मैं बेसिकली पेनी स्टॉक्स को ना तो रेकमेंड करता हूँ ज़्यादा, और ना ही मैं उनको स्टडी करता हूँ, बिकॉज आई वुड रादर इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स. मुझे नहीं पता, आई हैव टू चेक इट्स फंडामेंटल्स, मे बी फंडामेंटल्स वुड बी गुड. तो आइडियली यू कैन डू द सेम थिंग. ये इसकी सपोर्ट जोन लग रही है और इसका एलिगेटर लाइन भी यहीं पे है, विच कम्स अराउंड 45. You can keep holding with this, and more possibly after retesting it, it will take support and come out, go ahead from there. Sekhar G, MGL, and Varun Beverage. Yeah, Varun Beverage, I also said it's a long term stock. You can keep holding it. MGL. MGL. देखो वीकली चैनल पे, वीकली चार्ट्स पे तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, एंड इफ यू सी इट्स आई बहुत आई मीन पैरेलल चैनल में चल रहा है ये, बट दिस कैन बी सीन ऑन मंथली चार्ट्स. इट माइट रिट्रेस टू दिस लेवल विच कम्स अराउंड 950 960. तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन, मतलब उससे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. एंड इवन इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, दीज आर द लेवल्स वेयर यू कैन बाय अगेन, 950 960. हर्ष क्लीन साइंस. ओके हर्ष जी, क्लीन साइंस. देखो मैं इसीलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग चार्ट्स, क्योंकि बिकॉज यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ. अब देखो इट इज़ ऑल कॉन्स्टेंटली बिलो दिस एलिगेटर लाइन. दिस इज एक्टिंग एज सपो great resistance. Touches here falls, touches here falls, touches here falls. So until and unless it closes above this alligator line, it will be sell on rise. तो ये एलिगेटर लाइन क्या है, 1400 के आसपास लगा लो, 14 14 20. इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो ओनली देन यू कैन गो थिंक ऑफ गोइंग पॉजिटिव. बिलो दिस इट विल ऑलवेज बी sell on rise. Fresh buy, don't do it. Don't try to catch falling knife. अगर 2400 से 1400 आ जाता तो पॉसिबली 1400 से 400 भी जा सकता है. डोंट जज, डोंट assume anything, just go with the flow. PSU railway stocks. Yeah, I don't know PSU railway stocks, how many are there. I'll pick any one. IRFC ना. मैं इसको when it was around 90 तो मैंने कहा था कि come out of it, है ना. People were no this and that. तो मुझे तो see, technically I don't see any target here. It made a vertical high, now it is retracing.
Where can it, up to what level it can retrace? I don't know, right? So to be very frank, it might make a rounding bottom here and go out of it, or it might retrace to alligator, which will be even painful, 55, 56. So what you can do is, if you are holding, मैंने तो यार 90 पे यहाँ पे बहुत लोगों को कहा था कि डोंट इन्वेस्ट हियर, वो टेक्निकल टारगेट्स आर अचीव, अब तो इसके बाद जस्ट इट इज़ मोमेंटम, इट वाज जस्ट मोमेंटम. तो all you can do is tail your stop loss if you are in profit, right? वो जो इसी के नीचे का लगा लो आप, 69 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट if you are in profit. And if you are in loss, if it's small loss, then maybe थोड़ा सा भी क्लैरिटी आ जाए ना, कोई सिग्नल की, आई मीन एनीथिंग, इट्स जस्ट रिट्रेसमेंट, आई डोंट नो. अगर फिबोनाची भी लगाएं तो देखो, देखो अभी तक 65 इज सपोर्ट, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है. तो 65.5, तो ये भी एक अच्छी मतलब सपोर्ट लेवल हो सकती है. आफ्टर दिस इट कैन फॉल टू 50, 48, वही जो मेरा एलिगेटर और ये फिबोनाची बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. बट आई थिंक इट विल टेक सपोर्ट हेयर 65, 66. तो like I said, either you hold it with a trailing stop loss, or wait for a rounding bottom formation, or any formation. Fresh buy don't do if you want to buy anything fresh, because you said na, PSU stocks, railway stocks, clean science I have already said, latent view. See, latent view is basically looking good, right? It gave us a breakout and retrace, and again from this it started going up. Now this will be a 390. 390 will be a support. So basically you can hold it with 390 stop loss. Closing on, right? अभी है कितना? It closes at 401. थोड़ा सा डीप लेके, if you want to buy fresh, let it become a give a green candle signal, then you can buy. I mean थोड़ी सी buying आने दो. Even on daily charts if you see, देखो डेली पे भी it is sell signal है, और मंथली पे तो अभी इसका चार्ट बना ही नहीं है. सी बेसिकली ये सपोर्ट जोन में ही है, मंथली में भी एलिगेटर के बीच में ही है ऑलमोस्ट. सो इट इज़ इन द सपोर्ट जोन. So maybe and it's forming doji, so possibly it can reverse from here, but keep a stop loss below this, which comes 390. If it closes below 390, come out of it. Pasupati, it's near support on monthly and weekly charts, right? So just keep this as a stop loss, which is 34, 33. See, when you buy any stocks, just always go for check the fundamental also. Like you go to screener, see whether Pasupati Acrylo. अब ये देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन .02 to -10%. बट दिस इज व्हाट अ वेस्ट. ये इसी में सितंबर का है ना, सी दिस थिंग. मैं इसीलिए कहता हूँ यू पीपल गेट अट्रैक्टेड बाय दिस पेनी स्टॉक्स. दे आर पेनी फॉर अ रीजन, right? And see, EPS is going in negative, profits are in negative. I mean,
what is good in this stock, and why are you holding it? I won't even invest even 1 rupee in such stocks. This is why I always say, always go with the best. Check whether the stock is really performer or not. Check yourself your fundamentals and profits and losses, everything. If the stocks, I mean, it is if the stock is performing good, then you can think of going, buying it. Now you are stuck at 45. What can I suggest? You bought here just because you might have thought कि yeah, this is rounding bottom. यार कोई एक reason तो हो. I mean, it was there near. Maybe it was waiting for result. Result देखा negative and it came down. Either you should have put stop loss here. अब यहाँ पे you can put a stop loss of 33. I don't know. मुझे नहीं लगता the way देखो जैसा result आता stock normally performs accordingly. Always, you know, check the results also. If the results are good, then even bad, stocks are also start performing good. Britannia. See, Britannia, has it posted the results? देखो अभी रिजल्ट नहीं आया तो मे बी यू कैन नॉट कमेंट ऑन दिस. टेक्निकली मैं बता देता हूँ. वीकली पे तो सेल सिग्नल है, टू बी वेरी फ्रैंक. इसका जो टारगेट था ये हमारा था 5100 समथिंग, राइट. ये इसका वहाँ पे हिट हुआ. पीपल बुक प्रॉफिट. सो व्हाट वर यू डूइंग? आई मीन यू शुड हैव बुक प्रॉफिट ऑल्सो. नाउ इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, सी दिस इज दिस. It might come to this level 4100 something, then you can think of buying it again. या फिर if you are holding, I don't know, मैं कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ पे आप what to do, how to do. I mean, because it's 200 something rupees down further, it is possible ना. Even ITC is on retracement. 500 से वो it will go up to 410 420, and then fresh buying can come over there. So maybe if it is waiting, it will react after the result. We'll think of this stock na after the result. Targets were hit, just come out of it. If you investor, then you don't need to ask me. Then you just buy on every day. But if you are trader, short term or mid term, then you need to respect the levels. That okay, this is the rounding bottom hit. I'm in target and it got hit. You come out of it. I think that is it. All अभी तक तो इतने ही है मेरे पास. Maybe if there are many, I'll go over. I'll make another video, right? So I think that is all for the now. I've done my best. Have a nice day.